Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about community economic development. Community economic development is an inclusive and participatory process by which community initiates and generate their own multiple bottom line solution to economic problem. कि जो communities हैं वो खुद अपनी जो bottom line economic problem है उनके लिए solution जो है वो generate करती हैं और design करती हैं और वो किस तरह से करती हैं by stabilizing local economies. वो अपने लोकल इकोनॉमी जो है उसको स्टेबलाइज करती हैं, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, वो लोगों के लिए, उस कम्युनिटी के लोगों के लिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्डिंग अ लोकल रिसोर्सेज on local resources and capacities, increasing community control and ownership. Community economic development, which is also called CED, is an approach to local economic development that is driven by our community's social, environmental, and economic priorities. It is shaped by those who live, work, and run businesses and public services within that particular community. Our, our CED approach is for those with an interest in making a local economy function better, for groups it doesn't serve well, or for those with a specific challenge such as tackling local unemployment, improving energy efficiency, or boosting local spend. It will support your community to shape their local economic future both strategically and practically. तो कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें ये कोशिश की जाती है कि आपकी जो अपनी लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट दिया जाए, उसको फ़रोग दिया जाए, उसको फ़रोग दिया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, टैक्सेस में कमी की जाती है, उनको और से और मराहत दी जाती हैं, रियायत दी जाती हैं, ताकि लोकल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे। अगर लोकल इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो जो कम्युनिटी है वो तरक्की करेगी। जब कम्युनिटी की तरक्की जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होगी तो वो कम्युनिटी जो है सस्टेनेबल कम्युनिटीज में शामिल होगी। CED takes into account social, environmental, and economic outcomes and recognize the links between local, regional, and national layer of economy. Using a CED approach will enable community workers to build on the knowledge, experience, and resources in the community to identify and make the most of local economic opportunities. यहाँ पे लोगों के लिए जो लोकल लोग होते हैं उनकी के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। Community economic development's purpose is to revitalize communities, develop and rehabilitate affordable housing, promote sustainability, अभी हमने sustainability की बात की, attract investment, build wealth, encourage entrepreneurship and create jobs locally. Community economic development identify, disseminate, and implement successful best practices for community action agencies and related organizations. It provides strategies by which local development organizations initiate and generate their own solution to their community's economic problems and thereby build long-term community capacity and foster the integration of economic, social and environmental objectives. जब हम लॉन्ग टर्म जो है वो उसका सोल्यूशन जब तैयार करते हैं तो इट्स मीन we are working towards sustainable community development. Public program may be used and corporate support attracted, but organization representing the interest of local community launch and directs the initiatives. और वो कौन कौन से initiatives होते हैं? For example, micro or small business loans programs or business classes, counseling and technical assistance, social enterprises, commercial development, incubators, social development strategies. ये तमाम जो हैं वो economic development of a community के अंदर हम discuss करते हैं. As an alternative to conventional approach to community economic development, CED focus on developing sustainable communities based on the relationship between economic factors and social environment and cultural element of community well-being and resilience. तो कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप अपनी लोकल जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करते हैं और अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट को
को सस्टेन करते हैं, ताकि वो कम्युनिटी एक लंबे अरसे तक तरक्की करे और उसकी तरक्की की राह में कोई भी रुकावट ना हो, या कोई ऐसे फैक्टर्स ना क्रिएट हो जाएं जिससे उसका ग्राफ जो है वो नीचे आने लगे। थैंक यू वेरी मच।